हाय फ्रेंड्स। आज हम CTET के जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसका जो चैप्टर 11 है इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 में है एवल्यूशन ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर का 2012 से लेकर 16 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे वीडियो को बिना स्किप करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। फर्स्ट में है मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, level of student as intelligent or average learner, using variety of to collect information about the students learning across the socialistic and co-socialistic boundaries, using the technical language to give feedback। यहाँ पे आपको सोल्यूशन जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए असेसमेंट को क्या करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेवलिंग स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट और द एवरेज लर्नर। इसके बाद है school-based assessment is primarily based on the principle that, इसका आपको 4 ऑप्शन है। assessment should be very economical, teachers know their learners capabilities better than external examiners। इसके बाद students should at all cost get हाईली ग्रेड्स। लास्ट में है स्कूल्स आर मोर इफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका आपका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है, टीचर नो डियर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। टीचर ही अच्छे तरह से जानते हैं उसका स्टूडेंट का कैपेबिलिटीज को। उसके बाद है असेसमेंट्स फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट में है नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद है continuous and comprehensive evaluation emphasis। continuous and comprehensive evaluation जैसे कि फर्स्ट में है redundancy, the board examination, continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning, how learning can be observed, recorded and improved upon, thus में फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग। तो इसका आपको यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का जो है, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, recorded and improved upon। इसके बाद आप देख रहे स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपका फर्स्ट में है मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल, डिलोटेस द
accountability of boards of education, hinders achieving universal national standards, helps all students learn more through diagnosis। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑप्शन नंबर 4 में सही हो जाएगा। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। इसके बाद है स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू, इसका आपको सारा ऑप्शन है। फर्स्ट में डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, ensure the holistic development of all students, motivate teachers punctually, record all the activities of students for better interpretation of their progress। लास्ट में है encourage schools to excel by competing with the other schools in their area। तो आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसे यहाँ पे सेकंड जो है इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल द स्टूडेंट्स। इसके बाद है ए टीचर कलेक्ट एंड रीड्स द वर्ड्स of class, then plans adjust next lesson to meet student needs he she is doing। वो क्या कर रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट में है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असेसमेंट फॉर लर्निंग, शिक्षा के लिए जो असेसमेंट है। टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फर्स्ट में आर ओवर बाउंडेड बिकॉज दे नीड टू टेक frequent टेस्ट besides Monday टेस्ट। सेकेंड है नीड टू assign project work in each subject to individual students, observe students minutely on daily basis to assess their values and attitude। लास्ट में feel a sense of ownership for the system। तो यहाँ पे भी आपका चार ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे दिया है टीचर हु वर्क्स अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फील सेंस ओनरशिप फॉर द सिस्टम। इसकी बात है which one of the following is not a suitable formative assessment task। suitable formative assessment क्या नहीं है। फर्स्ट में ओपन इंडेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट। इसका ये जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। The assessment of students can be used by teacher in teaching to develop insight into। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स who need
to be promoted to the higher class. Second, not promoting those students who do not meet school standards. Changing the teaching approach to meet student needs. For creating a bright and weak student इन क्लास में ब्राइट और weak स्टूडेंट का अलग से क्लास बनाना। तो इसका अभी सही ऑप्शन ऐसे ही सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, चेंजिंग द स्टूडेंट टीचिंग अप्रोच मीट स्टूडेंट नीड। Continuous and comprehensive evaluation is essential for fine-tuning of test with the teaching. Second, alerting the accountability of the Board of Education, correcting less frequent errors than more frequent errors, understanding how learning can be observed, recorded, improved upon। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट में जो है ऑप्शन 4, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। In learning, assessment is essential for grade and marks, screening test, motivation, informing, fostering the purpose of segregation and ranking। इसके से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेशन। Which of the following statement would be the most effective way of conducting assessment? एक असेसमेंट कंडक्ट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हो? Assessment is an inbuilt process teaching learning. Assessment should be done twice in academic session, at the beginning and at the end. Assessment should be done by an external agency and not by the teacher. Last में assessment should be done at end of the session। इसका सेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, assessment is an inbuilt process in teaching learning। इसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? फर्स्ट में इज ए गुड strategy level to and categorize students, should actively promote competitive spirit among children। इसके बाद should generate tension, stress to ensure learning, is a way to improve learning। असेसमेंट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे टू इम्प्रूव लर्निंग। शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट। असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ it serves as feedback for the students as well as the teacher. It is done only once at the end of the year. Comparative evaluation are made difference between students' achievements and last में indices where
एंड स्ट्रेस एमोंग द स्टूडेंट्स। तो इसका आपको सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। सो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का चैप्टर 11। तो इसी तरह की हर चैप्टर का वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो इस टाइप के अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको दोस्तों को ये वीडियो से कुछ भी हेल्प हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।